Good morning students, I am your English teacher Shabana. Today we will do revision of chapter number 1, Toy Train to Urdu. As you know that students, your PT1 is going to be held from 10th of May. Okay, so students, now this is the time for revision of chapter 1 and 2. So that's why I will give you some work for revision. Okay students, you have to pay attention and look at the board everyone. Okay students, revision Toy Train to Ooty. In this chapter I have taught you about the toy train, about the film which is film on the train, and what is the full name of Ooty, and what is the full name of toy train, and when did it started up, है ना? First it started up between Mettupalayam to Ooty. Okay students, first of all I will tell you the summary of this chapter. Okay, in this chapter the main attraction of in this chapter you have known about the toy train of Ooty, and the toy train Ooty is the main attraction of Ooty, and Ooty and toy train. Toy train is a heritage train, and students, what is the meaning of heritage? Yes, the meaning of heritage is old but still valuable. Old but still valuable. जो पुराना तो है लेकिन बहुत प्रीशियस है, बहुत वैल्यूबल है, इसकी बहुत वैल्यू है. Okay students, now we will start the revision of chapter number 1. Okay students, now you have to tell me the answers of the questions. Okay, the full name of Ooty. Yes, tell me the full name of Ooty. Yes students, full name of Ooty. The full name of Ooty is Udgam Mandalam. Yes, and you have to revise the spelling. Okay, you have to revise the spelling of Udgam Mandalam. Okay, call the spelling with me. U D Udgam, G A M A N D Mandalam, L A M, Udgam Mandalam. Okay, this is the spelling of Udgam Mandalam, and you have to revise it. Okay student, there is some mistake in this spelling. Can you find out? Yes students, there is a mistake, that is U D H, Udgam Mandalam. What is the spelling of Udgam Mandalam? U D H. Yes, okay, we will write again. Okay, U D H and A G A M A N D L A M, Udgam Mandalam. Okay, and now you have to revise the spelling and learn this word, because this is the full name of Ooty and you have to learn this. Okay, next one is who maintains Nilgiri Mountain Railway Toy Train. Who maintains? कौन maintain करता है? Who maintains Nilgiri Mountain Toy Train? Nilgiri Mountain Toy Train को कौन maintain करता है? Yes students, ट्रेन को कौन मेंटेन करेगा? रेलवेज है ना, रेलवेज ही मेंटेन करेगा. नाउ you should know where is Ooty. Ooty is in South India. Okay, Ooty is in South India. That's why the South Indian Railways maintains Nilgiri Mountain Toy Train. Easy. Okay, you have to revise this also. Okay, what is South Indian Railways?
answer of this question. Who maintains Nilgiri mountain toy train? Ooty is in South India, है ना? Ooty South India में है. That's why South Indian Railways maintains नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन, है ना? नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन कौन मेंटेन करता है? साउथ इंडियन रेलवेज. ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ साउथ इंडियन रेलवेज? SOUT, साउथ इंडियन एंड रेलवेज. ओके, इजी ना? नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी हेरिटेज ट्रेन्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मैनी heritage trains? Yes students, I have taught you about the meaning of heritage. Okay, what is the meaning of heritage? Old but still valuable. पुराना होते हुए भी तब भी वो पुराना है बट तब भी वो बहुत वैल्यूबल है. दैट इज द हेरिटेज. उसको हम हेरिटेज की कैटेगरी में रखते हैं. तो टॉय ट्रेन इज हेरिटेज ट्रेन. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड. इट इज वेरी ओल्ड बट स्टिल वेरी वैल्यूबल. बहुत वैल्यूबल है. ओके, हाउ मैनी हेरिटेज ट्रेन्स आर देयर इन इंडिया? देयर इज ओनली वन. देयर इज ओनली वन. Okay, so you have to write only one. Okay students, these are the answers of these questions. Okay, you have to learn the spellings and you have to learn the words also as well as. Okay students, after the question answer we will learn word meanings of the chapter. Okay, I will write the word and you have to tell me the meaning of that word. Okay, first word is attraction. Yes, what is the word? Attraction. And you have to tell me the meaning of this word, attraction. What is the meaning of attraction? Yes students, the meaning of attraction, something जो अपनी तरफ, ऐसी कोई चीज जो अपनी तरफ हमें खींचती है. ओके, that has मैग्नेटिक पावर. इसमें कोई मैग्नेटिक पावर होती है. दैट इज द अट्रैक्शन. ओके, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं. ओके, समथिंग दैट मेक्स people want to go there, want to go to a place. Yes students, attraction is a word that means something that makes people want to go to a place. मीन्स अट्रैक्शन किसमें होता है? जो अपनी अट्रैक्शन, कोई चीज़ जो हम देखने के बाद दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसकी तरफ दोबारा खींचने लगते हैं अपने आप ही. ओके, लाइक ऊटी, द सीनरी ऑफ ऊटी, है ना? द नेचर ब्यूटी इज अट्रैक्टेड अस, है ना? हमें अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट अस, एंड दैट इज द अट्रैक्शन, दैट इज द मेन अट्रैक्शन. व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ ऊटी? टॉय ट्रेन. टॉय ट्रेन इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ ऊटी. एंड लोग क्या होते हैं? पीपल अट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से ही ऊटी में. ओके, तो यू हैव टू लर्न दिस मीनिंग, समथिंग दैट मेक्स पीपल वांट टू गो टू अ प्लेस, कि उस प्लेस पर लोग जाना चाहते हैं. ऐसी कोई चीज, समथिंग दैट मेक्स, जो लोगों को वहां जाने के लिए लोग वहां पर अपनी इच्छा से ही जाते हैं. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. एंड नेक्स्ट वन इज स्टीपेस्ट. Yes students, steepest. Yes, what is the meaning of this word? Steepest, slope rising and falling. Okay, slope rising or falling at a very slope, at a very sharp angle. Okay, like this.
that is the slope area. Okay, that is the slope area. जो बहुत शार्प एंगल से नीचे की तरफ आता है दैट इज द स्लोप एरिया, एंड बहुत शार्प एंगल की तरफ ऊपर की तरफ जाता है दैट इज द स्लोप एरिया. ओके ओके स्टूडेंट्स, so you have to write slope rising. Slope rising. Okay, slope rising at a sharp angle. Slope rising at a very sharp angle. You can write this meaning in your mind. Slope rising at a very sharp angle. बहुत ही sharp angle से ऊपर की तरफ स्लोप होना, ढलान. स्लोप मीन्स ढलान जो होता है ना, ढलान वाला एरिया जो होता है दैट इज द स्लोप. स्लोप राइजिंग एट अ वेरी शार्प एंगल. बहुत ही शार्प एंगल से ऊपर की तरफ राइज होना. ओके, दैट इज द स्टीपेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज एज यू नो दैट हेरिटेज. You all know the meaning of this word, है ना students? Yes, heritage. Heritage means what? Heritage means old but still valuable. Still valuable. Okay, old but still valuable. Okay. The next one is available. Now students, now I will write the next word, that is available. Available? No. Now I will write journey. Yes. What is the meaning of this word journey? Yes students, journey. Journey means आप लोग journey करते हैं in train, in plane, in your car, है ना? That is the journey. When you go to a place. When you go from a place to another place, है ना? That is the journey. Okay, journey means you can say a trip. A trip. Okay, that is the correct meaning of this word. Next one is marvelous. Marvelous means बहुत ही ज्यादा प्रिटी होती है, बहुत ज्यादा चीज, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. मार्वलस मीन्स समथिंग दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड वी कैन से वंडरफुल, है ना? समथिंग वेरी ब्यूटीफुल और वंडरफुल. तो वी कैन राइट एनी वन वर्ड. ओके, वंडरफुल और वेरी ब्यूटीफुल. तो आई विल राइट ब्यूटीफुल. Okay, very beautiful. Marvelous means something very beautiful. Next one is refreshment. Yes, refreshment means food and drink. Okay students, refreshments like when you travel in a train to go in another place, then you take some refreshment, you take some food and drinks from the stations, है ना? स्टेशन से कुछ फूड एंड ड्रिंक्स लेते हो, दैट इज द रिफ्रेशमेंट. वो क्या होता है? रिफ्रेशमेंट. तो फूड एंड ड्रिंक्स, वी कैन राइट फूड एंड ड्रिंक्स एंड where is the meaning in the book? Small amount of food and drink, and you can write food and drink also. Food and drink. Okay, food and drink. That is the correct meaning of refreshment. The next word is available. Okay, available means something ready for, something
ready for use or for buying. Available means कुछ खरीदने के लिए, कुछ buy करने के लिए और कुछ और buy करने के लिए और use करने के लिए जो ready है that is available. Ready to use or buying something ready to use or buying. Something ready to use. Okay, you can write this only one. Something ready to use or buying. Okay, available means something ready to use. जो use करने के लिए बिल्कुल ready है that is available. That is available. Okay, the last one is timeless. Timeless means ageless. जिसकी कोई एज नहीं होती, एज हो जाने के बाद भी दैट इज मीन्स कोई भी चीज़ जब ओल्ड हो जाती है और उसके बाद भी वो न्यू लगती रहती है, तो वी से टाइमलेस, वी से एजलेस कि इसकी तो एज ही नज़र नहीं आ रही. ओके, लाइक अभी आपके पास फ्रिज है, यू हैव फ्रिज एंड इट इज ओल्ड, एक्चुअली इट इज वेरी ओल्ड बट इट लुक्स लाइक न्यू, है ना, बिल्कुल न्यू दिखाई देता है, तो दैट इज टाइमलेस और एजलेस. ओके, वी कैन राइट एजलेस फॉर इट. ओके, एजलेस, टाइमलेस और टाइमलेस मीन्स एजलेस, नॉट अफेक्टेड, एजलेस और नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टाइम. टाइम का उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज टाइमलेस और एजलेस. ओके, दीज आर द वर्ड मीनिंग from chapter 1 and you have to learn these meanings for the exam. Okay students, in your live session I will take your oral test of the word meaning and you have to learn each and every word from your chapter 1. Okay students, okay, you have to learn. Okay, revise them. Journey means a trip. Journey means a trip. Journey means a trip. Marvelous, very beautiful. Marvelous, very beautiful. Marvelous, very beautiful. Refreshment, food and drink. Refreshment, food and drink. Refreshment, food and drink. Available, something ready to use. Available, something ready to use. Available, something ready to use. Timeless, ageless. Timeless, ageless. Timeless, ageless. Heritage, old but still valuable. Old but still valuable. Okay, heritage, old but still valuable. Okay students, you have to learn these words properly. Okay, and you have to remember this thing always. You have to revise, you have to learn the meaning of the words as well as you have to learn the spellings of the words. Okay, words के spellings भी learn करने हैं. Okay, because you did many mistakes in spelling. I have seen your homework and you all did you all did a lots of mistakes in spellings. So you have to learn the meanings as well as spellings of the words. Okay students, stay home, keep safe and revise your chapter. Okay, bye bye.